उसकी वजह से उसकी वजह से लगता है कि जो बोलना है जल्दी जल्दी बोल के अपनी बात खत्म करे। माइंड में ऐसा रहता है, तो डबल माइंड चलता है। कई बार प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर भी मतलब एक बार कॉन्फिडेंस डाउन होने के बाद हम्म। दोबारा अप होने में काफी टाइम लग जाता है। हम्म। तो जैसा कुछ अभी कुछ दिनों से मेरे साथ हो रहा है कि अभी हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हम्म। तो उसको थोड़ा सा बिजी होने की वजह से प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्टैमरिंग बढ़ रही है। हम्म। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो गया है। हाँ, तो उसमें कैसे कॉन्फिडेंस को दोबारा अप करे, जबकि हम्म। पहले काफी अच्छे से इम्प्रूव भी प्रैक्टिस करने के बाद इम्प्रूव भी हो गई थी। हम्म। हाँ जी। तो इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब मनीष? इम्प्रूवमेंट का भी हम लोग काफी दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ये हो सकती है कि स्पीच में इम्प्रूवमेंट हो। स्पीच में इम्प्रूवमेंट ये भी हो सकती है कि मैं जो मेरी हिचकिचाहट थी, हेजिटेशन थी बोलने में, वो कम हो रही है। तो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस में जो इम्प्रूवमेंट होगी उसके काफी पीसेस हैं। तो उसको आइसोलेट करके बस फ्लुएंट स्पीच के ऊपर ही अगर हम फोकस करना शुरू करें तो हमारा जो फोकस है ये काफी नैरो रहेगा। तो अगर हम इम्प्रूवमेंट को ब्रॉडली देखें कि अगर मैं हकला रहा हूं लेकिन मैं लोगों से बात कर रहा हूं जिन लोगों से मैं बात नहीं कर सकता था अर्लियर। तो हकलाहट हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो फीलिंग मोर ओपन अबाउट इट। आई एम ऑल्सो फीलिंग अ लिटिल बिट लाइक लेस होल्डिंग बैक। मेरी अवॉइडेंस थोड़ी सी कम है। तो इम्प्रूवमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अगर आप इम्प्रूवमेंट्स फ्लुएंसी के लेंस से ही देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको आप कॉन्फिडेंस ऊपर होगा, लोअर होगा। लेकिन आप इम्प्रूवमेंट को जो है अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो शायद आपका उस चीज पे जो पर्सपेक्टिव है, उस चीज का जो नजरिया है वो थोड़ा सा चेंज होगा। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट इम्प्रूवमेंट मीन्स, because I think that might be a useful concept to explore. यहाँ पर इम्प्रूवमेंट से मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ मैं पहले कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से बात कर पा रहा था, अब वहां पर बात करते समय फियर, मन में डर बढ़ गया है। और स्टैमरिंग भी बढ़ गई है। बात करने से पहले ही थोड़ा डाउट आ रहा है कि हम्म। और बात करते करते भी डाउट आ रहा है, कहीं हम्म। अटक रहा हूँ या अटक सकता हूँ। हम्म। ये डाउट बढ़ गया है। ओके। तो आप वॉलंटरी स्टैमरिंग करते हैं? वॉलंटरी नहीं करता। ओके। क्योंकि जो फियर है, जो डाउट है, जो एंजाइटी है, उसको कम करने के लिए ये भी प्रैक्टिस है। तो अगर आप थोड़ी सी वॉलंटरी स्टैमरिंग करना शुरू करेंगे तो आपका फियर अपने आप कम होगा। तो थोड़ी सी ज्यादा एक्सपोजर होगा आपको, तो फियर थोड़ा सा कम होगा। अगर आप कोई टेक्निक यूज करना चाहते हैं लेकिन किसी को बताएंगे कि मैं टेक्निक यूज करने वाला हूं, उससे भी फर्क होगा आपकी एंजाइटी को, फियर को। और टेक्निक आप ज्यादा ठीक से इस्तेमाल भी कर सकेंगे क्योंकि आपने लिसनर को बता दिया कि आप यूज करने वाले हैं। अगर आप अपनी अवॉइडेंस बिहेवियर थोड़ा कम करेंगे, कोशिश करेंगे, जैसे कि वॉलंटरी स्टैमरिंग, अगर मैं अगर इस टाइप की वॉलंटरी स्टैमरिंग करूं, लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग करूं, तो मुझको ऑटोमेटिकली थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है कि मैं आई कांटेक्ट के साथ स्टैमरिंग कर रहा हूं। मैं आई कांटेक्ट के साथ हकला रहा हूं। अपनी टेंशन को थोड़ी और मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन आई कांटेक्ट के साथ मैं कर रहा हूँ। ये सब कुछ जो मैं वॉलंटरी जो स्टैमरिंग जो मैं कर रहा हूँ, इससे मेरी टेक्निक प्रैक्टिस भी हो रही है।
मेरी जो आई कांटेक्ट की जो प्रैक्टिस है ये भी हो रही है, और एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा फियर भी कम फील कर रहा हूँ, एंजाइटी भी कम फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ साथ साथ मैं कर रहा हूँ। तो अपने फियर को मैनेज करने के लिए सबसे 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 स्ट्रेट तरीका ये है कि थोड़ी सी वॉलेंटरी स्टैमरिंग करके देखिए। और वॉलेंटरी स्टैमरिंग जो भी है कि इट कम्स इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। आई कैन डू इट lightly, I can do it with more tension, I can do it frequently, I can do it infrequently. It's a whole playing field. तो अगर आप देखें कि अगर थोड़ी सी वॉलेंटरी स्टैमरिंग कर सके, कंफर्ट जोन में ही अगर आपने थोड़ी सी वॉलेंटरी स्टैमरिंग की, तो उससे भी थोड़ा सा फायदा होगा आपको। बिकॉज ये जो कॉन्फिडेंस जो है ना, ये ऊपर नीचे तो जाएगा थोड़ा सा, वो तो डेफिनेटली होगा। एंड दैट्स गोइंग टू बी, इट्स पार्ट ऑफ द स्टैमरिंग एक्सपीरियंस। स्टैमरिंग इज वेरिएबल, स्टैमरिंग इज सिक्लिकल। तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट देयर आर गोइंग टू बी हाइज एंड लोज, लेकिन मैनेज करने के लिए वॉलेंटरी स्टैमरिंग का एक ऐसी मोडालिटी है जो कि हमको स्पीच के ऊपर काम करने का मौका देती है, और एट द सेम टाइम हमारे फियर को, एंजाइटी को भी मौका देती है कि वो कम हो। तो दैट इज वेयर आई वुड स्टार्ट इफ आई वर यू, टू गेट बैक ऑन ट्रैक अ लिटिल बिट। इन मनीष, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं। आपने जो कोर टास्क में वीडियो बनाए हैं बहुत सारे ना, मैंने उन वीडियो को देखा है। और वीडियोस में अक्सर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप अच्छा बोलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जब कुछ बोलें तो अगले को समझ में आए। मगर साथ में जो अभी डॉक्टर अमित ने जो कहा कि कि वॉलंटरी स्टैमरिंग से आपके दिमाग का डर निकल जाएगा कि मैं खराब बोल रहा हूँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और और वॉलंटरी स्टैमरिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं, ईमानदारी से मैं कहूँ तो। वॉलंटरी स्टैमरिंग करने से आपके दिमाग का ये डर दूर हो जाएगा कि अगर मैंने खराब बोला, मैं हकला गया, तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। इस डर से आप आज़ाद हो जाओगे। इसीलिए वॉलंटरी स्टैमरिंग करना जरूरी है। और इसीलिए ये वनवाड़ी वर्कशॉप में और इसके अलावा भी हर वर्कशॉप में हम लोग कई राउंड वॉलंटरी स्टैमरिंग के करते हैं। तो अभी जैसे रवि तेजा ने बताया कि वर्कशॉप के बाद वो अपने शहर में गए, और जहाँ पहले कभी नहीं हकलाते थे वहां पे वो हकलाए जाकर, और वो बड़ी खुशी से ये बात बता रहे हैं। यानी हकलाने के बाद भी उनको डर नहीं लगा। तो इसलिए ये कहीं पे ये भी समझना जरूरी है कि हकलाने से ज्यादा खतरनाक हकलाने का डर है। और वो डर निकालने का अच्छा तरीका है वॉलंटरी स्टैमरिंग। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कुछ देर पहले बोला था कि घर में रिपेयर का काम चल रहा है। कुछ संबंध हाँ जी। आपके डिस्कम्फर्ट का उसके साथ भी है क्या? घर के रिपेयर में जो काम चल रहा है घर में, उसको हाँ, लेकर कुछ थोड़ा सा वो भी कुछ है। परेशानी चिंता है? परेशानी नहीं, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया है कि अच्छा ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, और अच्छा शेड्यूल ऑफिस का अच्छा। काम थोड़ा सा डिले हो रहा है। थोड़ा सा ठीक है, वो भी है ठीक है। कनेक्टेड। तो उसके उसके लिए जो कुछ भी आप प्रैक्टिकल वे में कर सकते हैं ना, वो आपको करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में चिंता के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ स्पीच ही नहीं है, और बहुत से कारण हो सकते हैं। मुझे कुछ काम करना था, ड्यू है, नहीं किया है मैंने, टालता रहा हूँ, उसकी चिंता भी दिमाग में एक्यूमुलेट होती है। तो उन सब के लिए जो कुछ भी आप प्रैक्टिकल वे में कर सकते हैं वो सब कर डालिए। ठीक है ना? ठीक है। तो थैंक यू सो um, मच। um, मैं एक चीज और एम्फसाइज करना चाहता था मनीष को, कि अगर आपको लो कॉन्फिडेंस, अभी आप लो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं, तो उसका नेचुरल रिजल्ट होगा कि आप बहुत छिपाएंगे, कि लोगों लोगों के साथ कम बोलेंगे, ये सब कुछ। तो उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए अगर आप थोड़े से टीओपीजी में जो कोर टास्क हैं वो रिपीट कर लें, स्टैमरिंग इंटरव्यू कर लें लोगों के साथ। जैसे कि आपने इतना शानदार वीडियो बनाया था मॉल में, उस टाइप की प्रैक्टिस भी अगर थोड़ी सी कर लें, तो अपने आप को खुद आप डेटा देंगे, एडियो डेटा देंगे कि मैं इसके ऊपर आई कैन ओवरकम दिस। तो अगर आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है लोगों से बोलने के लिए, तो वो जो कोटास जो हैं टीओपीजी के, जो दो दो तीन जो कोटास हैं जो कि आपको पुश करते हैं लोगों के साथ बात करने के लिए, वो रिपीट कीजिए। दैट विल आल्सो बी हेल्पफुल। ठीक। Were you gonna, you have a question? Sorry.
Go ahead. मैं just कहने 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 वाला था मनीष को कि लाइक जब आप एक सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, मैंने नोटिस किया कि आप आई थिंक प्रोलोंगेशन यूज करते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ लाइक जी। लाइक वो वर्ड प्रोलॉन्ग करते हैं। हाँ तो लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस हाँ के समय करता हूँ, जब प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो पाती, प्रैक्टिस में मैं जरूर करता हूँ। ओके ओके हाँ लाइक ये तो या एग्जैक्टली तो एक्चुअली हमने भी लाइक लाइक आई मीन तो ये जो प्रोलोंगेशन है एंड आल्सो बाउंसिंग है, हमने वन वन वारी के वर्कशॉप्स में डिस्कस किया था कि शायद ये भी लाइक ये भी वॉलंटरी स्टैमरिंग है इन अ वे, Mhm. इट्स लाइक लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग Mhm. तो Yeah. तो आप तो एक्चुअली आप कर रहे हो ऑलरेडी वॉलंटरी स्टैमरिंग, आप जानबूझ के एक लाइक अपने शब्द शब्द को आप चेंज कर रहे हैं, यही है वॉलंटरी स्टैमरिंग। या और लाइट कर मैं सकते क्विक हैं like I prolongation just bouncing and then diet, sorry हाँ हाँ yeah yes I Dr. Sachin. I just want to welcome Seema, and also share that Seema was there in one of our workshops in Vanvadi. And Seema, whenever you want to share any feedback or anything about that workshop, you are most welcome. Seema Gupta. Thank you. Okay, hi, Okay, so yes, sure. go on. Please tell us about yourself or about this workshop experience if you want to. Okay, as somebody who does not stammer, I think मेरे लिए काफी अच्छा रहा experience. I think mostly it inspired me to post the 2 3 days workshop. I ended up doing voluntary stammering in with strangers in public, which so to give some context, like Dhruv and I are friends, and he already shared with me this concept, and we have done voluntary stammering together. But I think attending the 3 days workshop meetings, it basically normalized stammering because everybody is stammering. In fact, I'm the only one not stammering. So I was the one feeling different, and it made stammering so normal and so common that I actually felt like on my own, अपने मन में I'm like, अब कल जाके I'm gonna go at the train station and buy the ticket and I will do voluntary stammering. And उससे पहले when Dhruv told me that this is the next step which is taken, you know, first you do it with a safe person, then you do it. And I mean, in my mind, I was like, that's impossible. Like, it was the most scary thought actually. But I did it, and I actually did it 3 times with 3 different situations and 3 different people that day. And I will say that the experience was very scary, and I became very conscious. I think I developed what Dhruv is calling like some kind of stammering mindset, even in doing voluntary stammering, because of I'm noticing the smallest expressions in the other person. Are they reacting like this because I'm doing voluntary stammering, or are they anyway like a nice person? Like, what is going on? So ये सब, even in just 1 2 experiences, I could see, and after that experience, I could empathize with Dhruv or with anybody who stammers in a much greater degree than I had till now. Despite hearing so many things about stammering from Dhruv, it actually made a big difference because I think it is an embodied experience. So yeah, just wanted to share that. And yeah, I think it was a great workshop. I learned a lot. Yeah, I have a lot of questions, Seema. Can I ask you a couple of follow-ups? sure. So first of all, a comment. I think a lot of what you are talking about resonates very deeply because I teach the graduate course since hammering at Emerson College at the place where I work, and routinely there is an assignment where students have to do what we call pseudo stuttering or simulated stuttering, basically a voluntary stammering experience going outside. So a lot of what you're saying resonates because that's what a lot of the students report, that they could relate, they could empathize, they could do all this stuff. But also, most importantly, I try to not position this as a disability simulation because there are lots of problems with disability simulations.
But I do position it as a clinical tool. And of course, my students need to learn it as a clinical tool because they're going to be working with people who stammer in the future. So using it, positioning it as a clinical tool is very, very helpful. So that's where I'm coming from in terms of my mindset towards it, how people who don't stammer need to learn to stammer, especially if they're going to work with people who stammer. But I'm curious to know what your motivation was, because it doesn't look like you're training to be a speech pathologist. So what is your interest? What is your, like, why are you engaged in it? What are you getting out of this? Is she there? Oh, Yeah, sorry. I think the simple answer is just like I am close friends with Dhruv, and I think anybody who I'm close to, I'm interested in understanding their world, you know. Ah, So it is a okay. personal reason. It's not like some professional reason. I think I value connections and relationships a lot. Anybody who I'm becoming close to, I tend to want to understand them, understand their world. It's my way of connecting. So Hmm. that is the motivation. It's just connection. Well, that's lovely. That's really lovely. And I think in the process, you're learning to be an ally, you're learning to be an advocate for the stammering community. So all of those things are also great advantages. Great. Wait to hear all this. Yeah. I also want to add one more thing that she's participating in workshops on conscious communication. In fact, she conducted a session around that theme, how to listen, attentively to the other person, even when he's not talking, to be Mm. quiet when the other person is quiet. So I think that motivation also probably may have been working there to understand, a special case of communication between stammerers. How do they communicate? Mm. Is that right, Yeah, Seema? I mean, yeah, I would call like as the main motivation is definitely like just connection. But I think it is true that I do help facilitate workshops on it's called conscious communication. It is about much more than communication. It is like also about understanding the self at a deep level, understanding others at a deep level, and connecting actually. So even that is connected to my, I guess, interest in connection with people. And I think I have definitely found a lot of useful parallel tools, even from stammering TISA workshops to use in those workshops. Like, for instance, the pre-block correction, during block correction, and post-block correction. This concept of like there should be tools to do before, during, and after. And in our conscious communication workshops, we talk about this concept of being in reaction as a zone, like, being in comfort zone or being in a reaction zone or being in a stretch zone, which I think is pretty self-explanatory. So Mm. reaction zone is the one which is unconscious and you're in some extreme kind of state, which is not a choice. But Mm. before that and during that and post that, what are the things you can do? So Yeah. stammering, a block of stammering is like a reaction, basically. Mhm. Uh, Maybe, unless it's possible I've not understood it exactly, but that concept, for example, is definitely very helpful. And there's many concepts I think that can go back and forth between, what the work that I do also. So yeah, I've gained a lot. So what do you do professionally, Seema? Absolutely nothing. Okay. I'm Okay. smiling. I'm All right. That sounds great as well. It's all good. Okay. Yeah, thank you for sharing your experience. Yeah. I think it's also probably a very good idea to learn like how to listen to content beyond form. I think that's one of the things that a lot of people who don't stammer can gain by, how to transcend the form of the communication in terms of really tuning into the content, and that's really important to do when you're talking to somebody who stammers as well. So again, you're being an ally and all of those kinds of things. So that's lovely to hear. Thank you. Hello. Thank you. Thank you, Seema. Thank you so much for being there. Hello. Yeah. Who wants to go next? Please raise your hand. Okay, so can I invite Sunil Chavan to share his feedback quickly? Sunil Chavan, maybe. Sunil. Sir, can you hear me now?
I can hear you. Am Yes. I audible? You can share your Okay. feedback about the Uh, workshop. What did you learn yes, sir. and how do you implement it? Yes, sir. About the workshop, means it was like means uh, we have the different kind of distractions in our life, and so we have to means 100% to give our means attention to one thing. So it was a great experience to means cut out the whole world and means focus on the stammering only. So that was a means positive thing about this. And while giving the means while we were conducting the workshops, how you means explained a lot of things over there. Means we do to which we to which we don't give any means importance like that things. So you magnified the whole problem to us, and we can understand it very well. So you explained it very well, and we also got it. And the second thing is means uh, uh, how did it uh, help me? So while we were doing the while we were doing the activities, means I got to know a friend, and he told me the exact thing where I was means getting stuck, and he gave me a feedback that only means if you can means improve this thing, you can do better. And means my whole means this 1 year or means any means feedback that I get. This was the first feedback that I got, and it was very clear to me that where I'm getting stuck and where should I improve. Now you have means 10 to 11 people, so you cannot means personally uh, uh, talk to everyone. But he told me, and I from that point onwards, means I'm trying to improve myself, and also. This acceptance thing. Now we have done some changes in the uh, uh, previous previous years. So we tend to get in the habit of talking in that way. And now we are changing our means thoughts and our beliefs. So I think so that it will take some time to us to accept this. And uh, means like we go to gym, we have a pain in the muscles, so it takes some time to build our body. So like that, this acceptance also is a process, and I have to give it 1 year or so, whichever time it takes. So that will improve me, and uh, so we have to enjoy the process and we get to it like that. Uh, so that is from my side, sir. Great. Thank you, Sunil. Thank you so much. I remember on day one, you were very quiet. And compared to that, today Yes, you're sir. talking so much with stammering. This is definitely improvement. And I will just say, Yes, sir. keep on talking like this. Don't worry about whether techniques are coming out properly or not. If you can use technique, good. Even otherwise, just keep on talking. So हाँ सर, इसमें एक और बात है कि मैं इंग्लिश में थोड़ा सा हमें ज्यादा हकलाता हूँ, लेकिन हिंदी और मराठी में मैं फ्लुएंट हूँ, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा था मुझे, लेकिन तो हिंदी इसलिए में आप मैं बोल अंग्रेजी में सकता खूब हूँ, इसीलिए आप वो तो अंग्रेजी में है। खूब बोला करिए, अंग्रेजी में खूब बोलिए। यस सर, यस श्योर, वो मैं कर सकता हूँ। यस सर, श्योर। बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड यही सुनील, थैंक यू एक्चुअली सो मच। यही मैं गोइंग बैक टू दिस कॉन्वर्सेशन एट द बिगिनिंग, जो मनीष ने जो सवाल पूछा था कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मैं कैसे उससे, यू टॉकिंग अबाउट improvement, and I was talking about a broader based improvement. So it looks like in your case, Anil, you are talking, you are in fact one of the things that is routinely seen in speech therapy over here in the US at least is when somebody is covert, somebody is not like hiding a lot, there's a lot of avoidance behavior. Stammering more means that you're talking more, that you are being more talkative than you were being earlier. That is an improvement, right? Using techniques is not an improvement for somebody who's being very covert, because covert means that you're going to use the technique further to hide your stammer even further. So for somebody who's covert, one of the therapy goals that is often brainstormed, and hopefully the person accepts it, is that you need to talk more. That means you need to stammer more, that you've been hiding it for a long time. So that is an improvement.
is what I'm saying. Like linking it back to what Manish was saying earlier, improvement is not just speaking more fluently or speaking with less tension, but the fact that even talking more is a huge improvement. Yeah. सर एंड इनफैक्ट जब मैं मेरा वर्कशॉप खत्म के करके आया था, तो मैंने मंडे मॉर्निंग पे ही जो मैंने अभी मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो पूरी टीम को मुझे ब्रीफ करना पड़ता है। तो वहां पे मैंने जो भी मीटिंग से थी वो कंप्लीट करी, और उसके बाद मैंने एक ब्रीफ बताया कि मतलब वो हमारे ऑफिस में एक कल्चर है कि हमने कि संडेज को या फिर भी जो भी हमारे वीकडेज ऑफ है तब हमने एक्साइटेड क्या किया। तो वो ये पूरा एक्सपीरियंस मैंने वहां पे शेयर किया। और मतलब 70% लोगों को पता भी नहीं था कि स्टैमरिंग के लिए इतना ये भी होता है। तो फिर ये ग्रुप्स के बारे में उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दी, और फिर उन्होंने एक दो लोगों ने मुझे इससे मतलब फीडबैक लिया। और एक जो मेरे कॉलीग है जो मेरे साथ काम करते हैं, उनको मैंने नेक्स्ट वीकेंड पे मैंने वर्कशॉप के लिए भेजा उनको। तो क्या बात है। हाँ, तो उन्होंने भी अटेंड किया वर्कशॉप, एंड ही इज हम्म। ऑल्सो काइंड ऑफ हैप्पी विद दिस। शानदार। तो वेरी नाइस। वेरी वेरी नाइस। अपने आप ने अपने आप के लिए वकालत की, और अपने अपने अपनी कम्युनिटी की, और आपने अपनी कम्युनिटी के लिए भी अपनी कम्युनिटी के लिए भी वकालत की। तो दैट इज यस, ऑल्सो ह्यूज इम्प्रूवमेंट। ग्रेट। Excellent. थैंक यू Looks सर। like it was a very productive experience for everybody. यस सर। That's awesome. Good. I will now invite Arvind. Arvind is from Hyderabad and he said, I cannot come from Hyderabad to Mumbai for the workshop. But just for his information, from Hyderabad, two, three people came. Ramu came, Ravi Teja came from same Hyderabad. But anyway, I mean, I can understand Arvind may be facing some other constraints. But Arvind wants to join our online program. So we'll talk about online program also. You can join TOPG. But Arvind, in the meantime, you can ask your question. Go ahead. Whatever is troubling you, just go ahead and share it with us. Arvind. Arvind, can you hear me? Acha, maybe Arvind is not ready. So in the meantime, we can go to Naveen Raj. Naveen, are you ready? You want to share something? Okay. So anybody who wants to shoot something, some question or anything, or share any feedback, they are welcome. And if they don't, then we will start. सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। हेलो हाँ भूषण नमस्ते। बताइए। Chan, hello. हेलो हेलो सर। सर आजकल आजकल एआई का बहुत जमाना है, और लास्ट टाइम किसी ने एआई टूल के बारे में कुछ वीडियो डाला था। आई थिंक जय जय सर फ्रॉम अहमदाबाद। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि इससे प्रैक्टिस करके आप एक्चुअल वर्ल्ड है इसमें भी कुछ यानी इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या? क्योंकि हम अगर कोई एआई टूल है, एआई टूल में हम अकेले में प्रैक्टिस करते हैं, और फिर बाद में अगर आप यानी एक्चुअल एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचा जाए, तो वो इज इट वर्थ टू प्रैक्टिस विद दैट इन इन क्लोज लुक, लाइक इट विल हेल्प अस इन लॉन्ग टर्म, और इज इट जस्ट? सो ये मेरा एक थोड़ी क्यूरी थी इसके बारे में। No, that's a very good question. So the answer is yes and no. It's a complicated answer. कॉम्प्लिकेटेड आंसर इसलिए है क्योंकि जो भी आप नॉवल बिहेवियर अपने अपने स्पीच में डाल रहे हैं, चाहे वो बाउंसिंग है या प्रोलोंगेशन है, आई मीन ये ज्यादा नॉवल बिहेवियर नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज नॉवल बिहेवियर। वी डोंट यूजुअली जस्ट ऑटोमेटिकली स्विच टू बाउंसिंग और प्रोलोंगेशन। ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो इस चीज को सोचने के लिए जो है प्रैक्टिस जो है विल बी हेल्पफुल। अगर आप अपने अपने आप सोलो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, दैट विल बी हेल्पफुल because your body has to somatically integrate the stuff first, right? I mean, so I don't mean to say it's useless practicing in your own room, um, practicing सोलो, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि मैं प्रैक्टिस जो कर रहा हूँ रूम रूम में, दिस विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर इनटू द रियल वर्ल्ड। ये ऐसा नहीं होता यूजुअली हमारे साथ। एंड ये ऐसा नहीं होता क्योंकि
हकलाहट एक जो एनवायरमेंटली क्यूट बिहेवियर है। हम हर जगह नहीं हकलाते, हम हर जगह एक टाइप से नहीं हकलाते। our stammering varies by who we are talking to, where we are talking, and what we are talking about. Because all of those, you can't expect that what you're doing in a closed room will transfer into the real world. That is a big learning. I mean, we should just not even expect that that will happen. Lekin, using the tool in your own way, getting it familiar with it, getting your body familiar with it, will position you better to actually use it in the real world. So that's why I'm saying yes and no. इसका मतलब यह है कि आपको ट्रांसफर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी, real world opportunities create करनी होगी. And the only way I know how to do it in an efficient way is closed ended practice. डिटर्मिन कीजिए कीजिए ये मैंने जो टूल यूज किया है, चाहे प्रोलॉन्गेशन है या बाउंसिंग है या जो भी है टूल, मैं इसको 4 दिन जो है इस सिचुएशन में प्रैक्टिस करूंगा. मैं ट्रस्टेड कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ शुरू करूंगा. मे बी इन योर केस भूषण इट्स योर वाइफ, बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ videos where you've had conversations and you so maybe do it there in a very limited way. Find out who else in your comfort zone, who else you can recruit as a communication partner. So transfer is not guaranteed, but transfer can be incorporated through closed-ended practice, intentional, deliberate practice. And उसकी जो base जो होगी, जो foundation जो होगी, that will be your comfort level with the technique, and the comfort level will only grow the more you practice it on your own. So the answer is both, right? So yes and no. Yes is that it will help you get familiar with the technique, get you more comfortable with it, but no, because it won't automatically transfer, but you can create opportunities then where you can transfer this in a very specific kind of a way. Thank you so much. So I hope, Bhushan, you've understood, you got the Yeah, yeah. message clear that you have to do a lot more than AI supported practice. Because because your mind you can't fool your mind. Your mind will say, okay, I have done 1 hour practice with AI, but AI is only AI. AI is not the man is not the man in my office. So you have to do a little bit more than that, but still it is not a wastage of time. It is good. Now I'll invite Raghuveer Thakur, and after that I'll invite Vidya. Raghuveer, go on, shoot your question. Okay, sir. Thank you. I hope I am audible. Yes, you Uh, are audible. सर मैं सर इतनी देर से सुन रहा था, काफी सारे सवाल मेरे मन में आए, लेकिन मैं केवल बेसिक सवाल अपना पूछना चाहता हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैं टीसा में कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है, वर्कशॉप किया है, और मुझे इतना मुझे सीखना मिला है कि मैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कई सारे स्ट्रेंजर के बीच अब मैं अपने स्टैमरिंग को लेकर के कंफर्टेबल हुआ हूँ। लेकिन मुझे पता था कि मैं जिस फील्ड में हूँ, कोर्ट एडवोकेट, तो एक्सपोजर मुझे तब मिलेगा जब मैं कोर्ट को ज्वाइन करूँगा। तो इसीलिए मैंने टीओपीजी को रोका हुआ था कि जब जब मैं ज्वाइन कर लूँगा और जब नए नए सवाल मेरे मन में आएंगे अपने हेजिटेशन को लेकर के, अपने स्टैमरिंग को लेकर के, तो उस समय के लिए मैं टीओबीजी को बचा करके रखूं। तो बस इस सोच के कारण मैंने इसे अब ज्वाइन किया है। तो सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि इसको कितनी बार कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी रोक करके रखा था। आपने टीओपीजी तो को बहुत सर सालों तक मेरा बचा के पहला रखा हुआ था। आपने टीओपीजी को बहुत सालों तक बचा के रखा था ना, लास्ट रिसोर्ट। हाँ 10 साल हाँ, के बाद मैंने करूंगा मैं, सोचा कि अपने जब कोई बेस्ट चीज काम न करे तो। हाँ हाँ हाँ, मैंने कि उसकी बहुत ज्यादा तारीफें होती है, तो मैंने कि थोड़ा सा उसे रोक लेते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप एक्सपोज होते हैं उतने ज्यादा ज्यादा आपको सवाल मन में आते हैं। तो सर आज तो मेरा बेसिक सवाल यही था कि टीओपीजी को करने का मेरा मेन रीजन ये था कि मैं अपने एक्सेप्टेंस पर काम करूं, क्योंकि हकलाहट के लिए हम टेक्निक तो यूज करते ही हैं, लेकिन मेन रीजन होता है कि एक्सेप्टेंस सर, उसका कितना लेवल, मतलब कब हम कहें कि हाँ हमने एक्सेप्टेंस का लेवल अचीव कर लिया है।
जैसे मैं कोर्ट में हूँ, हालांकि मैंने 8 या 10 दिन ही मुझे लगभग हुए हैं, लेकिन अगर मैं उधर स्टैमर करता हूँ या मुझे अपने स्टैमरिंग को लेकर के कोई बैक ऑफ द माइंड थॉट आता है, तो क्या मैं ये कहूँगा कि अभी मैं उस एक्सेप्टेंस के लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ? ये मेरा सवाल है। अमित, यू वांट टू हैंडल? um, ये it's a कोर्ट का complicated मामला है, question. ये कोर्ट It's कचहरी का मामला है। एक कोर्ट कचहरी का मामला है. So I'm asking you to handle um, it. yeah, it's an interesting question. It's a challenging question. I'll tell you what my orientation towards this is. I think acceptance is uh, all fine, but it means different things to different people. आपका आपका जो माने है एक्सेप्टेंस है, that may be different from mine, that may be different from Dhruv, that may be different from anybody else. और तो एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है, आपको क्या लगता है एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? सो लेट्स स्टार्ट देयर, एंड देन सेकेंडली आई यू कैन गेट टू दैट आंसर इन जस्ट अ सेकेंड. आई वांट टू मेक अ बिगर पॉइंट हियर कि एक्सेप्टेंस का मतलब कि वी कैन रिकग्नाइज इन आवर ओन हेड्स कि ठीक है मैं हकलाता हूँ, फाइन, आई एम अ पर्सन हु स्टैमर्स, माय बॉडी इज वायर्ड डिफरेंटली फॉर स्पीच, ठीक है. We may even emotionally accept it very very well कि it is fine. हकलात में कोई problem नहीं है, it is not harming anybody, all those kinds of things. लेकिन the body is used to a certain behavior pattern. The body is used to avoidance. The body is used to feeling fear. The body is used to feeling anxiety. So I like to think about what is your acceptance practice? How are you practicing acceptance? It's one thing to know that you stammer, it's one thing to feel okay with your fact that you stammer, but the body doesn't function that way automatically. It doesn't automatically translate into behavior change because if you think it's fine to stammer, if you're emotionally okay with stammering, why are you still feeling the fear? Why are you still feeling the anxiety? So the idea is that if the more you advertise, the more you self-disclose, the more you voluntarily stammer, the more you talk about stammering with anybody openly, those are acceptance practices. That's how you practice acceptance. Without an acceptance practice, it is all at some level conceptual and theoretical. So even when you're using a technique, अगर आप prolongation practice कर रहे हैं, technique practice कर रहे हैं, तो one way to practice is to just find situations where you can do it. The other way to do it is to do it, pair it with self disclosure. अगर आप लिसनर को बता सकते हैं कि मैं हकलाता हूँ, तो मैं हकलाने के को मैनेज करने के लिए, ईज डेवलप करने के लिए, टेंशन कम करने के लिए थोड़ी सी बाउंसिंग ऐसे ऐसे में बोलूंगा या प्रोलोंगेशन में बोलूंगा, that is an acceptance practice. That will also make use of techniques a lot easier because you've already told the listener that you're a person who stammers and you're going to be using a technique. So my straightforward answer to you is, first of all, what does acceptance mean to you? उसके उसके बारे में सोचिए, लिखिए. उससे क्या होगा कि आपको आपका आपका अपना आइडिया जो है थोड़ा सा फर्म हो जाएगा. यू विल बी एबल टू ओन योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट एक्सेप्टेंस मीन्स टू यू. And then think in terms of doing certain things that TISA recommends, for example, voluntary stammering or self-disclosure, avoidance reduction, as being part of an acceptance practice. The moment you see it as an acceptance practice, it becomes something very concrete. Then you can ask yourself कि मैंने I mean अगले हफ्ते में किसको बताऊं, किसको वर्क सिचुएशन में किसको कंफर्टेबल फील कर रहा हूं बताने के लिए कि मैं हकलाता हूं. Well, that is a self disclosure. Now you've made one step towards an acceptance practice. मैं अगले हफ्ते किसके साथ थोड़ी सी वॉलंटरी स्टैमरिंग, लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग जैसे जो है मैं किसके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ. Now you've turned that into a very concrete action step that you can take towards your acceptance practice.
So how do you develop an acceptance practice is the big question. And there are lots of ways in which you can do that. But I think getting a good handle on what acceptance means to you could be a place to begin. ओके सर। रघुवीर, आपने 2 कोर टास्क कर लिए हैं, और हाँ सर। और आपकी आपकी यात्रा शुरू हो गई है एक्सेप्टेंस की। ये यात्रा कहाँ खत्म होगी, कहाँ कहाँ जाएगी, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये डेफिनेट है कि आपने जो अपने वीडियो बनाए हैं, शेयर किए हैं, यूट्यूब पे डाले हैं, इट मीन्स दैट यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दैट यू आर ब्रिंगिंग योर स्टैमरिंग आउट इनटू हाँ पब्लिक। और ये करके अब कैसा लग रहा है हाँ आपको? सर। आपका दिल कुछ हल्का लग रहा है या कैसा लग रहा है आपको? डर तो नहीं लग रहा है कि मेरा वीडियो अब यूट्यूब पे है? नहीं सर, डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो लिंक के रूप में है और पब्लिक नहीं है वो। तो मुझे उस चीज का डर नहीं लग रहा है। और ठीक है। पहले दिन मैं एक गार्डन में बैठा हुआ था तब थोड़ा सा मुझे लगा था, लेकिन हाँ आज मैं इंदौर के एक मेन चौराहे पर था, एलआईजी पर। हाँ तो आज मैं हाँ हाँ। काफी क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट जैसा मुझे फील आ रहा था। अच्छा तो अच्छा। आई होप कि मैं उस दिशा में बढ़ पाऊँ। अच्छा, आप जिस कोर्ट में काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत से एडवोकेट काम कर रहे होंगे, है ना? सर यहाँ पर 5,000 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और 2,500 हाई कोर्ट में है। क्या इन इन 5,000 एडवोकेट्स में से आप ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो एडवोकेट भी हैं मगर साथ में क्रिमिनल भी हैं? ऐसे लोगों को जानते हैं आप? एक्चुअली सर मैंने अभी मतलब कुछ समय पहले ही ज्वाइन किया है, तो हाँ। मुझे तो सारे ही क्रिमिनल लगते हैं यहाँ पर। हाँ, तो देखने मैं से सिर्फ थोड़ा एक, सा हाँ, तो मैं यही कहना हाँ, मैं अनकंफर्टेबल ये हो। कहना चाहता हूँ, मैं कि एडवोकेट जो आपके साथ हैं वो दूध के धुले नहीं हैं। और अगर आप ये कह दें हाँ कि मैं हकलाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ क्योंकि वहां पे ऐसे एडवोकेट होंगे जिन्होंने और बहुत से बुरे काम किए होंगे। हकलाना बुरा काम नहीं है उस हाँ लिहाज से। तो आप कभी कभी ये कह सकते हैं कि आई सम टाइम स्टैमर, हाँ बट आई एम एडवोकेट हियर। इट इज मच बेटर टू से दिस rather than to हाँ say that that I that I that I work for the gangsters and criminals and I get them out on bail हाँ so that they can do more murders. उनके मुकाबले में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हकलाने के साथ भी। So that's all I wanted to say. Okay. सर ये बात मैंने। हाँ 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 सर। हाँ सर, हाँ, थैंक यू। बोलिए बोलिए। थैंक यू। बोलिए बोलिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, मैं मतलब यही कहने वाला था कि ये बात मैंने अपने दोस्तों को बता दी थी कि मैं टीसा के एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ जो स्टैमरिंग पर हाँ काम करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई शर्म की तो बात So नहीं है। सर, आप, just एक बार just to share. या So, गो ऑन ध्रुव। हाँ हाँ, तो रघुवीर, मैंने हम चैट में एक नंबर भेजा है। वो एडवोकेट Alvin Dave है। He he's based in Mumbai. He also stammers and also has been part of TISA for a few years. He's done TOPG and stuff. तो आप उन से भी आप बात कर सकते हैं, like, yeah, since he's also an ओके advocate. सर। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर, मैं बिल्कुल बात करूंगा। गुड, सो मे आई इनवाइट नाउ विद्या। one हाँ, one गो ऑन। one one quick thing I wanted to add to what Raghuveer just said, कि अगर आपको अपने जो काम पे जो एडवोकेट हैं उनको सेल्फ डिस्क्लोजर में अभी हिचकिचाहट लगती है, then you can wear a TISA t-shirt, right? Because that is a way of putting yourself out there without being very overt about it, right? You can wear a t-shirt. अगर आप hesitation लग रही है आपको, तो at least wear that, and maybe somebody will ask you a question and say ये क्या है, ये क्या पहना हुआ है आपने, and then you can talk about TISA. Maybe that will open the door a little bit more. So there are lots of things you can do to ease yourself into self disclosure as well. रघुवीर ओके की सर, टी थैंक यू शर्ट सर, के बिल्कुल। रघुवीर आपकी टी शर्ट के लिए मेरे दिमाग में बहुत अच्छा लाइन आया है। यू कैन गेट इट प्रिंटेड ऑन योर टी शर्ट। उस पे लिखा होना चाहिए, स्टैमरर आउट ऑन द बेल। स्टैमरर आउट ऑन द बेल, बिल्कुल आई सर, एम मैं आउट इसे ऑन द प्रिंट बेल। करवाऊंगा। लेकिन also
हाँ। I'm out on the bail. I'm a ओके stammerer. सर, बिल्कुल मैं I एक्सप्लेन I करवाऊँ। can do anything now. I'm on the हाँ bail. चलिए, over to Vidya. हाँ, बट सर मैं कोर्ट में मुझे व्हाइट शर्ट और कोट ही पहन के जाना पड़ता है। Yeah, that's what I thought. हम लोग मजाक कर रहे काला हैं। काला हाँ काला सर, yeah. मैं भी कोट। मजाक कर रहा हूँ। Anyway, थैंक यू सो एक मच पिन रवि। बना सकते हैं, एक पिन हाँ 40 या वो हाँ, लगा सकते हैं। Anyway, आउट ओके ऑन ओके। आउट ऑन बेल। ओवर टू विद्या। So I have been uh, observing the places where I struggle more. So it's basically when there are some external pressures or like when there are expectations, and whenever I see a group of people where I don't know like how to make the point across. So those are the times that I stammer more. Like, I mean, even if there is a logistical, I mean, errors, that triggers my anxiety, and I uh, start to stammer those times. I was just thinking like how that can be, you know, uh, managed. Yeah, so let me ask you, Vidya, you stammer in other situations too, less or more, or it obviously changes. So are you talking about just in general? Are you aspirational for stammering less, or are you aspirational for the stammer being there, but you being less conscious about it? Because these are two different questions. I want to be less anxious about the overall experience of the speech whenever I uh, give in front of people, because I get Yeah. too caught up with a lot of other things, and it manifests in my stammer Hmm. many a times. Yeah, yeah. So I think there's a lot of things that are in the mix here, which can be explored. But one of the things I would recommend you do is to think about one situation like this that might be coming up in the next couple of weeks or whatever. If you can find a situation or create a situation that you can get into with a certain plan about how do I select deal with my anxiety in that situation. And there can be, so first of all, take it up as a project, see what it feels like in that particular situation that's easy for you, that's more in your comfort zone. I mean, there may be many situations where you're feeling hesitant or anxious or whatever, but they're not all created the same. So whatever is the easiest situation over there that you can get into, maybe start with a voluntary stammer. That could be another option, right? So the moment you start with a voluntary stammer, you establish your identity right away. You've also like somatically felt an easier stammering pattern because you have more management over it, you have more autonomy over it. Um, Practice what that would look like with paired with a self-disclosure. You can do a self-disclosure at the beginning, in which case it's a headline. You can also lead with a voluntary stammer and say, as you can see, I'm a person who stammers. Now it's self-disclosure as a footnote. So there are a number of things that you can do in that situation to ease the anxiety, and they all have to do with approach behavior. So self-disclosure is an approach behavior, voluntary stammering is an approach behavior. The other thing is figure out like what it is that you're anxious about. Usually it's some sort of an evaluation or a judgment or anything like it. So, we all have various levels of internalized stigma associated with it. I don't believe nobody has any. I mean, I think people have some level of it. So it's like, what is your level of internalized stigma? What are your assumptions? I think a lot of times articulating these thoughts to yourself is helpful, usually very helpful to actually write this down because then your thoughts are taking more of a permanent and a portable form.
So journaling about this stuff can be helpful, I feel. Quite often, people who are going through a change process get into journaling in a very intentional way. But you can also get into journaling in this specific kind of a way and say, let me start journaling those situations where this happens. When is the last time it happened? What are my assumptions when I'm getting into this situation? What am I concerned about? What am I afraid of? And then write down some things that you can say. You can, maybe you lead with a voluntary stammer. Maybe you lead with a voluntary stammer with eye contact. That's going to reduce your anxiety a little bit more. And then write about that. How did that situation go? So take some data, give yourself some data, um, by writing about the situation afterwards, and process it that way. So I think processing the situation in a more deep way can be helpful. I oh, I don't know if any of this resonates, but those were some of the thoughts I had. Thank you so much, Dr. Ram. Vidya, what do you think? What do you think will help you based on your own experiences? Because you also Actually, have a lot of experience. So tell yeah, us. I think journaling will definitely, because I haven't, though I know the process superficially, I haven't sat with it and thought about in depth. So probably journaling will help me in this, because I have started writing now after Vanvadi. So um, there is, yeah, there is, uh, yeah, it's very helpful in clearing my thoughts first, and also to think of new things that can help me. It genuinely, it did help me a few times. And one more question I want to ask. All of us tried using different self-disclosure scripts in different situations, and we actually role played that. So did that help you to some extent when you were doing it using a script of disclosing your stammering to a casual co-traveler in a train or a bus? Remember, you all had done role plays, very funny role plays. Did that help you? Did that challenge you? Um, yes, I think I have to implement this in a practical situation uh, to to evaluate further Yes, how it yes. goes. Yes, because I think that sometime if we've got a ready-made script here, and if we are saying those ready-made words, sometime it helps. If you've got ready-made words for a particular situation or a particular interaction, if you exactly know what I'm going to say. So think of that also, if you can be ready with a script beforehand. Thank you. Over to Vijay. I would also say one more quick thing here, just as a follow-up. I would also say to Vidya, maybe just what I was saying to Manish earlier, maybe repeat if you're going into a situation where you have a high level of anxiety and stress, maybe repeat one of the TOPG tasks the day before. Okay. Right? If day before or a couple of days before, if you just talk to a couple of strangers in a park or wherever and did a stammering interview, that's going to give you experience and is going to give you the data to say that, okay, I've been able to manage my fear in this situation very recently. And particularly if you go ahead and write about it as well, if you journal, if you also journal, it's kind of a variant of what is called video self modeling. If there's a particular behavior that you're trying to sort of practice, record yourself doing that behavior, practice that behavior, watch yourself doing that behavior, and watch yourself doing that behavior before you get into the next situation. Sportsmen do it, musicians do it. It's used in clinical literature quite a bit. Um, so this is a variant of that as well. It's like, go through a similar experience a couple of days before, write about it, and then process your writing before you get into the next experience. Okay. Okay. Yeah. Thank you, Dr. Ram. Thank you, Dr. Sachin. Thank you. Thank you so much, everyone. Vijay, are you ready with your question? Vijay Avare, Dr. Vijay Avare. In the meantime, I will ask Am I Arvind audible, also to sir? be ready. Yes, you are audible. Yes. Next will be Arvind.
Go on, Dr. Vijay. I'm traveling actually, so I came in the Okay. rain, in Mumbai. So I have not put my video on. Mhm. There is audio is there. Uh, Ah, I want to share my experience about Vanvadi. So I did the communication workshop in the first batch only. So the place was totally cut off from the internet. So there was no internet, there was no phone like telephone, there was no like TV connection. So, nothing was there. Means the man-made waves like sine waves and longitudinal waves were cut off, and the waves were like person to person communication, so alpha and beta waves, and person to person communication with the nice persons. With the total community, with the total what you call community, and the nature was there. It was a great experience with Dr. Sachin, and and Guru has meticulously planned the things. He had planned fruits. He had planned the lunch and dinner, food. All these things are planned very well. So I'm thankful, and I'm very happy to be the part of such uh, great workshop. So I'm thankful to Dr. Sachin and Guru for that. It was nice experience, really. So, and only one thing I want to quote. Uh, Actually, I was expecting the things there, like the mud house and all these things, jungle and all these things. But one thing I was not expecting about cold. The cold was more than my expectation. So it was totally nice experience. And regarding my experience about my talking and like teaching, I हाँ want to quote the thing, right? सर मुझे आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ हाँ आवाज आ वो रही है, बस वी में कैन हो। हियर यू. हाँ या गो ऑन, इट्स ओके, हाँ वी हाँ कैन हियर यू. हाँ हाँ। तो मैं आई वांट टू शेयर द थिंग। तो पहले तो आई टू वेरी आई मीन 2 hours लॉन्ग क्लास रिसेंटली। पहले मैं 40 मिनट का ही क्लास प्रेफर करता था, लेकिन मुझे थोड़ा सिलेबस कवर करना था, तो मैंने डीलिंग करके मतलब कंटिन्यू 2 घंटे का क्लास लिया। मैं सोचा कि देखते हैं कितना स्टैमर होता है, क्या होता है। तो डीलिंग करके मतलब प्रिपेयर था मैं, लेकिन मैं उसमें एक एक्सपीरियंस है मेरा, मतलब ऑब्जर्वेशन है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर अमित के साथ भी मुझे शेयर करना है, और आपके साथ भी सर। एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब मुझे फील हो रहा था कि मैं फटीग मतलब फटीग नहीं हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक से, तब मुझे कुछ ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ। तो इट वाज लाइक फ्लुएंट टॉक, मुझे लगता है कि फ्लुएंट ही टॉक था। थोड़ा बहुत इधर उधर एक आधा वर्ड इधर उधर था, लेकिन 1.5 घंटे के बाद में मुझे थोड़ा फटीग लगने लगा। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि आई वांट टू कंप्लीट दैट। तो मैं कंप्लीट करते रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मुझे अंदर से आने लगा कि आई एम गोइंग टू स्टैमर, तो भी मैं रुका नहीं। लेकिन पहले प्रीवियसली मैं क्या करता था कि मुझे जब अंदर से फील होता है सर वो कि हम हमें स्टैमर होने के चांस है, तो मैं रुक जाता था और उसको मैनेज करने की कोशिश करता था। बट तो इस बार मैंने मैनेज करने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वॉलंटरी वॉलंटरी स्टैमरिंग कर देते और रिएक्शन देखते, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं सामने वाले 2-4 स्टूडेंट की फेसेस देख रहा था, और मेरा मैं मतलब उनके रीड कर रहा था। ने हल्के से स्माइल किया, हल्की सी स्माइल किया, वो मैंने नोटिस किया कि दे स्माइल। लेकिन तो अगर ये पहले मेरे साथ ऐसा होता क्लास में,
तो मैं तो नर्वस होने वाला था बहुत, लेकिन उस बार मैं नर्वस नहीं हुआ। मैंने उनसे भी ज्यादा उनके साथ स्माइल किया, और वो थिंग मैंने कंटिन्यू की। तो ये बात तो, मतलब डिसेंसिटाइजेशन वाली बात मैंने थोड़ी बहुत तो सीखी सर। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे और डॉक्टर अमित से। प्रीवियसली व्हेन आई वाज टीचिंग, आई वाज प्रिपेयरिंग ए लॉट, अभी भी करता हूँ मैं। लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा होता था कि मैं क्लास में जाके एक्ट करूँ। इट वॉज लाइक एक्टिंग, इट वॉज लाइक रोल प्ले, कि सिलेबस दिया गया है, उसको प्ले करना है, जितनी डेफिनेशन है उसको मर्क किया है, उसको धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलते जाना है। तो इट वॉज लाइक रोल प्ले, और इट वॉज लाइक एक्टिंग, मतलब जैसा हीरो करता है वैसा करता था। लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने सोचा है कि वो एक्टिंग करने के बजाय थोड़े से डाइवर्ट करते हैं सब्जेक्ट इधर उधर। तो सर, सर पहले से पहले के कंपैरिजन में मेरी स्टैमरिंग जनरल पब्लिक में बातें करते वक्त या कहीं किसी के साथ पहले बात करनी होती थी, तो मैं मन में ही सेंटेंस बनाता था कि ये सेंटेंस मैं बोलूं, लेकिन अभी नहीं बनाता हूँ। तो मुझे लगता है मेरी स्टैमरिंग थोड़ी सी इसके कारण शायद बढ़ गई। तो ये बढ़ गई तो इसका क्या करूं मैं? मनीष से जैसा भी मेरा भी ये सवाल है कि ये शायद हम डिसेंसिटाइज होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अ, अ, हमारा जो फ्लुएंसी है ना, फ्लुएंसी, तो थोड़ा सा फ्लुएंसी कम होते जा रहा है। तो पता नहीं, शायद बाद में वो रिकवर हो जाए। तो डिसेंसिटाइजेशन कि इसमें मन के अंदर ऐसा होता है ना कि मतलब मन में भी आता है ना वो कंटिन्यूस, कि हमें कुछ सोचना नहीं है ना, कि जैसी जैसी बात निकलती है वैसी करनी है। लेकिन जैसी बात करती है वैसी करनी है, तो ऐसा करना है तो टैमरिंग भी आ रही है सर। यही मेरी यही मेरा था बात करने का। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन रेंज का बहुत प्रॉब्लम था। अमित, वैसे दिस हो इज गया योर सर, मेरा केस। इतना ही था। हाँ ठीक है। Not sure. क्या can you make your question specific, Dr. Wari? I'm not sure exactly what your question is. क्या सवाल है आपका? माय केस इज सर, suppose we are desensitizing ourselves. Uh, I mean, previously I used to teach with full preparation, right? हाँ, So I was like mugging the things. पूरा मैं याद करके उसको, मतलब उस बात को, जैसे डेफिनेशन है, all these things, I used to mug the thing, and yeah. so I was doing the play, acting in front of students, acting करना है मुझे। लेकिन मुझे इधर इधर उधर का कुछ पूछा जाए तो मैं स्टैमर कर सकता था। लेकिन हम्म, अभी वैसा नहीं करता हूँ मैं। तभी मेरा बोलने में ज्यादा फ्लुएंसी थी, क्योंकि मुझे याद था मुझे क्या बोलना है, और मैं बस एक्टिंग ये करता था। बट राइट नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल प्रिपेयर ए लॉट, बट while while delivering my talk, I will while delivering the talk, I will have some sideway discussion also. तो मतलब ये टॉक में जो कुछ मैंने याद नहीं किया हुआ है, जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, उसके बारे में अगर बात करने जाऊँ तो स्टैमरिंग बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा, मैं राइट। इसको पैराफ्रेज हाँ कर दूं विजय। विजय, मैंने जो समझा आपका सवाल ये है कि नाउ यू आर मोर स्पॉन्टेनियस इन योर लेक्चर्स, एंड हाँ, एंड राइट राइट राइट, एंड योर फ्लुएंसी लाइव हैज कम। लाइव, You are live and spontaneous, and as a result, you are stammering a little bit more compared to before. या When या you used यस, to, यस यस, earlier, you were mugging everything and just repeating the definitions from the book and not going right or left. हाँ You were हाँ, not spontaneous. You were just नहीं नहीं, I get it. rattling या I on understand. the bookish information. So that is his question. That now he's more spontaneous या and less fluent. So Yeah. does he need to get alarmed, or does he need to change anything about it? No, not at all. Not at all. I think if anything, this is an opportunity for you to desensitize even further. क्योंकि अगर आप ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं अभी स्क्रिप्टेड के बजाय, ऐसे कि आपकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था स्क्रिप्टेड होना,
and to deliver the lecture. But now, as Dr. Sachin is saying, you're being more spontaneous. That is an improvement. That is a development. Because obviously, अगर आप कोई नई चीज कर रहे हैं अपनी स्पीच के साथ, then something is going to happen, right? There is going to be some cascading effect of that over time as well. Because your stammering was more under management earlier, but you were being scripted. Now you're being more spontaneous. Stammering is increasing. So the question is, what do you define as success? अल्टीमेटली यही सवाल है ना कि आपको वेर आर यू फीलिंग सक्सेसफुल. If you are if there is a trade-off where you are feeling more successful being spontaneous, then let and there's some stammering that comes with it, all the more opportunity to desensitize towards it, all the more opportunity to share with people that you stammer. Um, right? So acknowledging the fact that you are a person who stammers becomes even more important in that situation, because then you're going to feel less anxiety and less fear and all those kinds of things. You can also manage your communication a little bit better. तो अगर आपको दो तीन चीजें जो है स्पॉन्टेनियसली अगर आप बोल रहे हैं, लेकिन दो तीन चीजें अगर आपको फोकस करनी है स्पॉन्टेनियस बोलने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, if you want to focus on stammering with more eye contact, that is a very specific thing that this situation will allow you to do. ठीक है, मेरी स्टैमरिंग ज्यादा होगी क्योंकि मैं ज्यादा स्पॉन्टेनियसली बोल रहा हूँ. लेट मी सी if I can stammer with a bit more eye contact. Let me see if I can pause a little bit more, because now you're working on your communication skills. तो स्टैमरिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन स्टैमरिंग में भी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि आप स्टैमरिंग को आई कांटेक्ट के साथ ज्यादा कर रहे हैं, टाइम प्रेशर रेजिस्ट कर रहे हैं पॉज करने से. So this is also coming back to what the question that Bhushan asked about he used the word improvement, but improvement can be very multifaceted. Improvement is multidimensional. If you're stammering with more eye contact, that's an improvement. If you're resisting the time pressure, that's an improvement. If you're being spontaneous with the content when you were being more scripted with the content, that's an improvement. So redefining success here can be quite useful as well. To Vijay, I would like to just add a couple of things. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. विजय, आप एक काम और कर सकते हैं. आप हाँ, सर. आप क्लास आप अपने हाँ, क्लास सर. में अपने क्लास में प्रेजेंटेशन का रिकॉर्डिंग बनवा सकते हैं. सर, मैं आपसे बात करूँ. हाँ, बोलिए बोलिए. हाँ, मैं बस ये कह रहा था हाँ, कि बना क्लास दो में रिकॉर्डिंग को आप देख सकते. आप रिकॉर्डिंग को देखना कि आप स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हैं तो कैसा लग रहा है. और सेकंड चीज आप ये कर सकते हैं कि जस्ट लुक एट द ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर बच्चों को बेहतर समझ में आ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एक दिन में नहीं पता चलेगा, लेकिन ओवर 3 months 4 months यू कैन सी इफ स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल ऑन देयर स्कोर्स, यानी उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है, उनको नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो फिर क्या फिक्र करने की बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है. देन यू कैन सेलिब्रेट. एक्चुअली बीइंग स्पॉन्टेनियस इज एज इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग फ्लुएंट. ओके. क्योंकि फ्लुएंसी में एक आर्टिफिशियल है ना, एक वो है कि आपको लग रहा है कि मैं फ्लुएंट हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट्स उसे संतुष्ट नहीं हैं. दे वांट टू लर्न मोर फ्रॉम यू, विच यू कैन डू ओनली व्हेन यू आर स्पॉन्टेनियस, व्हेन यू गो बियॉन्ड योर स्क्रिप्ट एज ए टीचर, है ना. तो ये सारी बातें देखिएगा, और एंड यू आर द बेस्ट जज. आप अपने आप से पूछो कि मैं सही कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है, मेरी बॉडी क्या बता रही है मेरे को. ओके, थैंक यू सो मच विजय. थैंक यू डॉक्टर अमित. लेट मी गो ऑन. I was just going to say, ये मेरे साथ भी होता है क्लासरूम में कि जब मैं ओवरली प्रिपेयर्ड होता हूँ, मैं स्क्रिप्ट को when I'm feeling time pressure, and if I'm sticking to a script, then I tend to be more fluent. When I go off script, I tend to stammer more. So I usually just acknowledge that in the classroom, a little bit off script here, so you'll see me stammer a little bit more. So you need to give me a little bit more eye contact, and you need to give me a little bit more time. So I'm clarifying expectations for the listener at that point in time. I'm acknowledging
my vulnerability not as a bug, but as a feature. That Very makes any true. sense. I think when you say to the student that I expect more eye contact, I think by that you are proving that communication is a two-way street. Yeah. Yeah. They also have It's a to do moment. something. They You've also got have to to do do something. something. Yeah. Yeah, it is a moment of advocacy, right? Yes. I mean, whatever moments we can find to advocate for ourselves, I think self-disclosure is a moment of advocacy. Voluntary stammering is a moment of advocacy. Acknowledging that you're stammering more here today and I'm going to stammer more in this situation. So please give me a little bit more eye contact. That's massive advocacy. Because आपने आप लोगों को you're comfortable enough with yourself, and especially in the classroom, you are in full control of the classroom. As a teacher that walks in there, the power dynamic is in your favor, hugely in your favor. So leveraging the power dynamic in in a way that is productive for you, and as Dr. Sachin is saying, productive for the student, because if you're going spontaneous, maybe you're answering questions in a more thorough kind of a way. It is also useful for them. So I would say use your classroom authority to to basically assert yourself in that way. Yes. Yes. Yeah. So So thank thank you you very so much, much. sir. Thank you, Vijay. Thank you, Amit. Um, Thank you very much. uh, Arvind is not here, so I will invite Dhruv to share his three learnings from this Vanvadi series of workshops. Three learnings, three major learnings. Dhruv, I know I'm springing this question at you rather suddenly, but that is my style of that is my style of communication. Um, I think the first one, I think the first one is to um I've become more aware when I'm in a block, and then at those moments I'm stopping, like I'm pausing. So I'm kind of like doing like a post-block correction, you can say, or trying to at least. That's sort of a big thing. And of course I was doing that before as well, but I'm doing that more now. So that, and also slowing down, like consciously trying to slow down speaking. Um, yeah. And also like in terms of my personal communication, trying to like accept like and again, this is something I was doing before as well, but just trying to accept my like that video on role conflict theory, Joseph Sheehan. So like really trying to embrace and accept myself as a stutterer, as a stammerer in that moment, trying not to fight the stammer when it's coming. So all of that. Yeah. And 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 also as well, kind of like it sort of reinforced my belief or my conviction that I have to practice every day. This is like a muscle, like some of us talked about going to the gym, and also the doctor Ahmed also talked about like having an acceptance practice. So for me, every day I'd like to make 2 phone calls, do voluntary stammering on those calls. And the voluntary stammering could look like bouncing or prolongation. So light voluntary stammering, maybe also some tight voluntary stammering. Yeah. So yeah, I guess those overall are my like learnings for my personal communication. Um, and and I guess apart from that, I realized that when we come together with people like Dr. Sachin and other people who help organize the workshop, we can do great things. We organized 4 workshops in 1 month in a forest, and we had people come from all over the country. So and it went off well. I think one of your big achievements was you invited Seema to the workshop. You roped her in. You totally Uh, you totally converted her to your church of high stuttering. yeah, 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 Church of high yeah, yeah, yeah. stuttering. It was a conversion. So it's also Deepak came as well, which is great for Ah, me. He's a yes.
friend of mine also doesn't stammer. So yeah. It was nice to have these people, have my friends join. Um, yeah, and also along with that, it also reinforced my belief that bringing in your community into your stammering spaces really helps your family, your friends, because now with them, I'm feeling more comfortable to stammer in front of them, Mhm. and also as well, if I'm having like a hard day with my stammering or something, I can kind of talk to them about it, and like they're more like I kind of like to think like they understand more. Just they've been to the workshop, they've met people who stammer, so their understanding of stammering has increased, which is great. Um, yeah. Can So you before, talk a little bit about anybody? Can you talk a little bit about this new group with the parents? There's another meeting group that you've organized, and something in the offing. I saw something on the Telegram group about that. Can you speak a little bit more about that initiative? Yeah, so it's basically just like a session, like a 2 hour session where we're asking people who stammer to invite their family and friends if they like, and essentially like along the same lines or for the same benefits of kind of inviting in your community. So then your acceptance like as an acceptance practice, to make it easier for yourself and help them understand stammering better to support you better. Yeah. I think it's a wonderful idea. Um, Wonderful idea. Yeah, great hmm, idea. hmm, hmm. Um, there is there's a there's a new clinical, well, it's not new anymore, it's a few years old, but there's a clinical tutorial I can share with you, which came out 2 or 3 years ago, which is in my graduate course right now. It's called Desensitizing Parents of Children Who Utter. And there are lots of activities meant for parents, for example, which can be tweaked and adapted to anybody else who is not a person who stammers. How do you talk about stammering with different people? How do you desensitize other people in your family? I'm happy to pass that along to you because it's got a very well fleshed out table and appendix which puts it all together in one place. So, if that could help you spark some conversations and so on and give you some specific ideas as to what to tell people, I think that can also be helpful. I'm happy to kind of share that with you. Yeah, great. Yeah, that'd be great. Thank you. And when you're yeah, so and also as well, maybe we can like schedule a call as well, like with you, like we can do one-on-one call, we can do a three-way call just to kind of like discuss your plans for August, your Yeah, availability, let's do what that. works better Sure. and everything. Sure. Okay, Yeah, let's cool, let's do it. Yeah, maybe next week. Okay, sounds good. cool. Well, it's so been before we, lovely. It's been lovely to come back to the TOPG fold. I'll let you wrap up, Sachin, and we'll go from there. no hurry, no hurry. Well, I mean, if you want to share something more, go ahead. There's plenty of time. And there's one new person, Akash Vats, who has just joined. Akash, if you want to share something, or if you just want to introduce yourself, even that would be fine. So just tell us briefly about yourself and ask your question. Akash Vats. हाँ जी सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम आकाश है सर, मैं दिल्ली से हूँ सर। मैं हैंग आउट मीटिंग्स ज्वाइन करता हूँ। मैंने ग्रुप में देखा, मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू सर। आपने कभी दिल्ली का एसएचजी मीटिंग अटेंड किया है? जब वो मेट्रो में जाके हकलाते हैं वो लोग, पार्क में जाके हकलाते हैं, वो चीजें कभी की हैं आपने? करूँगा सर, मैं अभी करूँगा। हाँ, करना, बहुत मजा आएगा और वो थेरेपी भी है आपके लिए। आप जरूर करना। अफजल वहां पे हैं, अफजल से आप कांटेक्ट करो, एसएचजी मीटिंग में जाओ और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। सो बिफोर वी कंक्लूड, डज एनीवन वांट टू शेयर समथिंग, सम थॉट, सम जेम, some idea?
सर मैं शेयर सुनील। करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सुनील, बोलिए। तो सर ये हमने जो आपने हमने ये कहा था कि कि जो भी मेरा टेक अवे है इस वर्कशॉप से, सो हाँ, तो इसको मैं फॉलो कैसे करूंगा। तो मैंने मेरे फोन पे वॉलपेपर रखा है, जो मुझे हर बार रिमाइंड हमें करा कर देता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैंने क्या लर्न किया है, और व्हाट शैल आई इम्प्लीमेंट इन माय लाइफ। और उसके बाद में ये था कि आपने आपका लाइफ स्पैन आपने शेयर किया था कि अगर मेरा स्टार्टिंग मेरा बॉन्ड डेट ये है और ये मेरा पूरा लाइफ स्पैन है, तो उसमें मेरा एक फेज है कि वहां पे मैंने स्टैमरिंग को मैं एलोकेट कर दो कि वो मेरा फेज स्टैमरिंग का था। अभी मेरा फेज ये जो अभी मेरा फेज है, जो मैं अभी अ, जो मैं अभी अ, जो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो एक ट्रांजिशन फेज है। और उसके बाद मेरा जो भी इम्प्रूवमेंट होगा वो होगा। तो वो मुझे कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने अभी नहीं किया तो फिर मैं कभी नहीं वो कर पाऊंगा। तो हमें स्टार्ट नाउ एंड हमें एंड समवेयर, नहीं तो फिर मैं वहीं पे ही रहूंगा। तो बिल्कुल वो एक बिल्कुल है। और बिल्कुल। दुर्गेश एक मेरा जो जो फ्रेंड बना है हटीसा के वर्कशॉप में, तो उसके साथ मेरा रेगुलरली हम कॉल होता है। और हमारे जो भी मेरे मीटिंग्स में प्रॉब्लम आए, जो भी उसके ऑफिस में मतलब प्रॉब्लम है, हम वो शेयर करते हैं। और वो जो आपका लाइफ स्पैन का ये था कि हमने फिर ये रिलेट किया कि सचिन सर ने भी कभी 2012 में टीसा स्टार्ट किया था, या फिर 2008 में, तो उनको भी कुछ तो फेज लगा होगा। तो फिर हमारा भी एक फेज आएगा कि वो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, एक इंटरमीडिएट फेज आएगा और फिर हम उसको फिनिश करेंगे। तो वो ही मतलब सीखने को मिला। और उसके बाद ये था कि जो भी अपना मतलब मेरा अप्रोच है कि मैं हम एक्सपेरिमेंट हमें ओरिएंटेड हूँ, क्योंकि जो भी मुझे करना है मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, और फिर उसका रिजल्ट देख के उसको जज करता हूँ कि मुझे ये कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो वो एक है। और उसके बाद जो भी मेरा ग्रेटिट्यूड है कि अगर मैं अभी तक मैं जो भी मतलब बात कर रहा हूँ वो एटलीस्ट लोगों को समझ आ रहा है, तो वो एक है। अब इसमें मुझे कैसे कंट्रोल करना है या फिर उसको ट्विक कैसे करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल है कि मैं वो कर पा रहा हूँ। सो दैट इज ऑल्सो देयर। और जनरल में जो भी आपने स्वॉट एनालिसिस सिखाया है, जो भी है वो मुझे मतलब जो नॉर्मल लाइफ में के लिए भी इम्प्लीमेंट करने में अच्छा हो रहा है। तो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस अच्छा था। और आपका एक एग्जांपल है कि आप मतलब अगर बेहतर करना चाहो तो खुद को वैसे मतलब बेहतर कर सकते हो। तो यही टेक अवे था मेरा। तो थैंक यू। थैंक यू सुनील, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, हर चीज़ का आपने कवर कर दी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक सुन के। और बस यही मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि स्पीच इज ए स्पोर्ट, मोर यू प्ले बेटर यू बिकम। यानी तुम जितना खेलोगे उतने अच्छे बनोगे। तुम जितना बात करोगे, जितना बोलोगे, जितना लोगों से मिलो जुलोगे, उतना ही अच्छे होते चले जाओगे। तो थैंक यू सो मच। सो गाइज एवरीवन, थैंक यू सो मच, इट वाज बहुत अच्छा लगा आप लोग सबसे मिलके बातचीत करके। और वर्कशॉप बहुत अच्छी थी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ध्रुव का, सीमा का, सारे पार्टिसिपेंट्स का। जंगल के बीच में ये लोग आ पहुंचे। और हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा भी था कि 3 दिन में हम लोगों ने उतने फल खाए जितने महीनों में नहीं खाते हैं। ध्रुव ने फल हमें बहुत सारे खिलाए। और जंगल में सनसेट देखना, सनराइज देखना, जंगल में वॉक के लिए जाना, बहुत बढ़िया अनुभव था मेरे लिए भी। बहुत अच्छा पहला अनुभव था ऐसी वर्कशॉप। तो once again, thank you everyone. And thank you, Dr. Amit. We are looking forward to have something similar with you. Maybe not a forest, maybe a beach in Goa will do for us. May not be 3 days, maybe Yeah. just 3 hours. Three Let's hours, do but beach. Yeah, sure. we are looking Yeah. forward to that. And do. All right. Nice seeing everybody. I'll see you maybe, whenever TOPG happens next. Bye, everybody.